Welcome to ACCAT tutorial. सो लेट स्टार्ट। ड्रॉ न्यू पार्ट। एक नया पार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे जिसको बोलते हैं इंसर्ट। ओके, जाएंगे पहले सेलेक्ट करेंगे स्केच को, अगेन फिर सेलेक्ट करेंगे स्केच, सेलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन, फ्रंट प्लेन ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सेंटर लाइन। ओके, और ये एंटर कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे लाइन को, ओके सिलेक्ट mirror entity, all parts, all sketch are select and select mid plane. Okay, फीचर में जाएंगे, डायमेंशन एंटर करेंगे, 80 mm का बनाएंगे, 22 mm, 70 mm, 60 enter, 50 mm enter, 40 45 enter. ओके, गो टू फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, ओके सेलेक्ट करेंगे, गो टू स्केच, अगेन सेलेक्ट लाइन, go to a smart dimension, enter dimension 2.5 mm, enter, टू पॉइंट फाइव enter. ओके, डिलीट, अगेन सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और हम लोग इसका भी डायमेंशन देंगे 2.5 mm, एंटर। ओके, इसके बाद हम लोग फ्यूचर में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, select mid plane, ओके, अगेन select, go to sketch,
Draw a 3-point arc. Select, go to add relation, select this point to this point. Okay, enter a smart dimension radius 2.5, enter. Okay, select extrude cut, okay, okay. Go to a sketch, normal, draw a line, select okay, not for construction purpose. Okay, go to feature, select extrude cut. Okay. Insert